Actually, no, this time. We were kind enough to give it out in Melbourne, but I think we have a few things to sort of consider, ponder upon, certain fitness issues. We were starting this press conference a bit late because we had some discussions regarding abroad as well. We think that it might turn in Sydney. So we want to give ourselves the best possible opportunity and have the best players on the field. So there's still some deliberations we're making. Look, we've kept Abrar on the Australian tour. Cliffy's looked after him very well. His rehab process has been going on. So we always had Sydney in mind, and that's why you saw him bowling yesterday. But again, we have to be absolutely sure that he's close to 100% fit, if not 100, and that if we're taking a risk, he doesn't break down over there. All batsmen, we give them equal opportunities. We even give the lower order quite a lot of opportunity while batting in the nets. So there's nothing different to that. I don't think there's much to read into that. But again, we have a lot of deliberations to make. That's why we're holding on to the playing 11 now, and hopefully maybe by this evening we'll have something in mind. Look, I think the technology is the same for everyone. Life comes in a full circle. It all balances out in the end. I don't have any complaints with the past. I thought we played some very good cricket, but look, we're playing the best side in the world, in my opinion, at the moment, and if you give them a sniff, they will pounce on any opportunities. There were phases in the game where we could have put them under a lot of pressure or closed the game out, but we had some opportunities which we didn't hold on to, or some partnerships that we had built where Pat Cummins decided to break those partnerships and really cause a dent in our batting. But look, the quality of the Australian side's there, and we have to make sure that we're not making a lot of mistakes to close out games. So it's very heartening for us. That's what you want to test your skills up against, the best sides in the world. And at least in Melbourne, we can say that we're on the right track and we want to play cricket this way. Like we said in the last test, when things went quite wrong by the end at Perth, you always have to look at the bigger picture. At least we have the lessons in front of us. At least we've put ourselves in those positions where from there we can dominate games. So now it's about learning from them, not repeating mistakes or trying not to repeat mistakes. And hopefully, if we can put in efforts like that, I'm sure that there'll be a lot of test wins in the future. But again, it's about learning from the mistakes and making sure that when you play quality sides, you can't be making those mistakes. Shaan, yeah, I think, look, I'm not 100% educated on the matter of what's gone on, but you want the strongest sides to be playing Test cricket. Test cricket is the pinnacle, it's the ultimate, and the World Test Championship is something that's gone on for like 4 years now. There have been 2 World Test Championships. This is the 3rd one. So as a Test playing nation, we'd all want that to continue. And when you want that to continue, all the best sides have to play that World Test Championship. So it's a pity that South Africa aren't being able to send their full strength squad, but hopefully somewhere down the line schedules can be made in a certain way where we see the strongest 11s playing Test cricket. And just another one quickly. I think it absolutely helped us being close to them and being at the game right till the end. There's certain things that are, like, I'll sound like a broken record, but you have to do in Test cricket. The first thing is take 20 wickets. We had that box ticked. And the second one is the scoring rate. If you score at a significantly less rate than your opposition, which happened at Perth, where there's a difference of 2 runs per over at least, then you'll be way behind in the game. Because we batted 100 overs in Perth and they batted 110. So that's not much of a difference, but the scoring rate did set us back quite a bit. So I think because we kept ahead of the rate a bit, but you still have to make sure that you bat for long periods. It's Test cricket. You can't just bat 50 overs and expect to beat a side like Australia. So our target is to hopefully bat at a quicker rate and obviously bat a decent time of overs as well. Once we got into the dressing room after day 1 in Melbourne, I said that's progress, because probably that's David Warner's 38, was it, in the first innings? Was his lowest score against us at home, probably. I thought that. So and then we made progress again in the second innings. Look, I think he's a terrific player, terrific ambassador to the game, and
and we wish him all the well with his life after Test cricket. He's got a lot to give to the game as well. And keeping him quiet would be a big job. It's a big occasion for him and the Australian cricket team, but our job is to get David Warner out early. But we wish him all the best with this Test match and what's to come forward for him as well. Look, I think personally and internally as a team, we've never had any sort of doubts with Shaheen. I think if you look at his efforts, he's bowled the most number of overs in a while in world cricket. He's playing every game. He gives it 150%. Even in training, you'll never see Shaheen shying away from 150%. Like, he'll bowl all the overs. He'll be running after balls, and there'll be a lot of boys shouting, "Easy, easy, don't hurt yourself," because we've seen him do that in the past. So Shaheen's our main guy, and we expect in every game what he did at Melbourne. I thought he was great. Could have been even more luckier, like in terms of the wickets. I thought, again, the wickets column did not match the quality of bowling that he presented at Melbourne. So Shaheen's very important for us, very integral for us, and it's up to us to also make sure that we're looking after him in the right way and making sure that physically and mentally he's in a good space. A Test match, how would you feel? I think there should be a countrywide search right now from the Australian government to make sure. We might need the best of detectives to get that back, because like I've said, he's been a great ambassador and he deserves every bit of respect, every bit of celebration for his unbelievable career. He's an example to openers, and we just personally love watching him bat, love watching him play, but hopefully that doesn't happen for long at Sydney. We'll see, but yeah, I mean, the Test cap is, like I said, Test cricket is the pinnacle, so the Test cap is the most precious thing, and the way the Australians look after their Test caps, you see them, how they wear them with pride, how they don't even, like, sometimes we have changed Test caps in the past, it's the same baggy green that continues, so I hope they find it, but yeah, it's the most precious sort of thing for any cricketer, and I hope David Warner gets it back. Question. I think there's a lot of stuff said about the slip cord, and I think in a game your hands are tied because slips are very specialized. A lot of fielding places in Test cricket are very specialized. You can't be moving people around to the slips. We had 4 genuine quick bowlers, so it was hard to get them into the slips. And then Abdullah Shafiq has been a good slipsman for us, and those are the guys that practice for hours every day. So if on the basis of 1 catch or 2 catches even, you change someone, you're also knocking their confidence down. But sometimes, like you do with batsmen or bowlers, they need some time away from that. And then you give them that time and allow them to come back again. He's a brilliant slips fielder. He's got age on his side. You'll see him standing in the slips more often, but I think if he doesn't feel comfortable, Babar's a decent first slipper. We'll put Babar there. Babar took a great catch over there as well, and you also have to see, I think maybe on this track you might not need 3 slips all the time, so it might make our decision a bit easier, and we'll see again how Abdullah feels. Okay, we'll come to those. देखें, आपने बिल्कुल सही बात बोली, की प्लेयर हैं, हमारे मेन प्लेयर हैं. कंसर्न बिल्कुल नहीं है, स्पेशली मेलबर्न के बाद जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें जिस तरीके से बाबर ने खेला. कभी कभार आपको रन्स नहीं देखने होते, कभी कभार देखना होता है कि क्वालिटी बॉलिंग की किस तरीके से हो रही है. कुछ ऐसे डिसमिसल्स हैं जिसमें कोई भी बैट्समैन कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे इनके पास बॉलर्स हैं. सेकेंडली उसका अप्रोच बहुत अच्छा था, 40 रन्स भी उसने किए, तो ये एक अच्छा साइन था कि बाबर को आई एम श्योर थोड़ी कॉन्फिडेंस मिली होगी. और जो भी बात हुई है उससे यही हुई है कि बाबर, आप आई थिंक सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो, नेट्स में घंटे घंटे वो बैटिंग कर रहे हैं, उसका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, उसकी फ़िटनेस टॉप लेवल पर है, और जिस तरीके से वो पिछली इनिंग्स में खेला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिडनी टेस्ट में आपको बाबर आजम से एक अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी. बहुत अच्छा सवाल है आपका. देखें, प्लेयर
की जो फिटनेस होती है, उसकी वर्कलोड्स होते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने से। और हमने देखा हुआ है कि जो हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं वो कंटिन्यूसली पता नहीं कब से खेल रहे हैं, अभी की बात नहीं है, 3 साल से कंटिन्यूसली। इसमें 2 T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, एक ODI वर्ल्ड कप हुआ है, टेस्ट चैम्पियनशिप चलती जा रही है साथ साथ। तो इन प्लेयर्स को बीच में एक आध लीग भी, हमारी भी PSL होती है, तो इन प्लेयर्स को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला। हमारी कोशिश यही रही है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें, बट कभी कभार आपको मैच की जो सिग्निफिकेंस होती है उसकी वजह से अपने मेन प्लेयर्स को खिलाना होता है। एक तरीके से अच्छा हुआ कि रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया, थोड़ा प्रेपरेशन का टाइम मिला, और वो एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए भी, एक वेकअप कॉल है कि रिजवान थोड़ा सा रेस्ट करके आया, थोड़ा सा प्रेपरेशन करके आया, तो आपको मेलबर्न में उसकी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस मिली। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये डिसीजंस ऐसे हमें लेने होंगे, बट उसके लिए बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमने खुरम शहजाद की इंडक्शन हुई, आमिर जमाल की इंडक्शन हुई, पिछले में मीर हमज़ा वापस आए, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आए अच्छी कंडीशंस में, मतलब टफ़ कंडीशंस में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। और हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं, बैटिंग के होगे, कीपिंग के होगे, उनमें भी हम लोगों को मौका दें, चांस दें, और ताकि हमारे मेन प्लेयर्स को भी रेस्ट मिले और साथ में हमारा बैकअप भी प्रोड्यूस होता रहे। देखें, जो मेलबर्न टेस्ट की आपने बात की, उसमें चेस वो फाइनल एलिमेंट था गेम का, बट हम दूसरे दिन भी हम मैच को क्लोज़ आउट कर सकते थे जब मैं और अब्दुल्ला खेल रहे थे। फिर जब हमने उनको 16 रन्स पे 4 हमने उनके आउट किए, हम उधर भी मैच क्लोज़ कर सकते थे। फिर जब एक वक्त मैं और बाबर खेल रहे थे, 110 रन्स पे 2 आउट थे, उधर भी एक बड़ी पार्टनरशिप से मैच क्लोज़ कर सकते थे। तो काफ़ी लेसन्स हैं, काफ़ी सबक हैं मेलबर्न से जिस पे हमें काम करना होगा। हम उस पर गौर ज़रूर कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि हमने चारों दिन एक ऐसी क्रिकेट खेली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी टीम आके क्रिकेट खेले, या अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आपको रिज़ल्ट हासिल करना हो तो आपको उस टाइप की क्रिकेट खेलनी होती है। तो सबक भी हैं साथ, बट हम काफ़ी पॉजिटिव हैं कि जिस डायरेक्शन में हम एज ए क्रिकेट टीम जा रहे हैं हम उसको कंटिन्यू करें, और फिर साथ में जब अपनी गलतियों से सीखेंगे तो रिज़ल्ट्स भी आएंगे। आई थिंक जो शॉर्ट पिच जो आउट हुए थे वो एंड में हुए थे, हमारा जो लोअर ऑर्डर था, आई थिंक उस पर ऑब्वियसली आपको काम करना होता है, बट जो आपके मेन बैट्समैन थे आई थिंक उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग काफ़ी अच्छी हैंडल की है सीरीज़ में। और आपको कभी कभार बॉलिंग की क्वालिटी को देख के भी एक्सेप्ट करना होता है कि आपको कुछ अच्छे बॉल पड़ेंगे। तो आई पर्सनली फील कि जो बैटिंग यूनिट थी उसने शॉर्ट पिच बॉल को काफ़ी अच्छा हैंडल किया। एक आध में भी मिस हैप हुआ होगा, बट जो हमारा लोअर ऑर्डर था वो ज़्यादा शॉर्ट पिच से आउट हुआ था उस इनिंग्स में। देखिए, आई फील इररिस्पॉन्सिबल थोड़ा हार्श वर्ड है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ पाना होता है आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी, स्पेशली इन कंडीशंस में। और जब आप रिस्क लेंगे तो कभी कभार कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको इररिस्पॉन्सिबल भी किसी को लग सकती है, पर्सनल बंदे को एम्बैरेसमेंट भी फील हो सकती है उस चीज़ से। बट अगर हमने डिसाइड किया है कि हम इस तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो गलतियाँ होंगी। थोड़ा पेशेंस खुद भी चाहिए होगा, थोड़ा पेशेंस हमें अपने स्टेक होल्डर्स से भी चाहिए होगा। ये देखना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है, हम ट्राई क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसके साथ सब्र रखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोशिश ये होगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड में इंटेंट जितना भी अच्छा हो आपको रन्स भी लंबे करने होंगे। लेकिन अगर इंटेंट अच्छा होगा, अच्छी रेट पे खेलेंगे तो वो रन्स भी जल्दी होंगे, दूसरी टीम भी अंडर प्रेशर आएगी, और इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग सिचुएशन आपकी टीम की सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी। देखें, आपका अच्छा सवाल है कि 10 साल में जितनी भी आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे कप्तान होते हैं, ख़ुद भी कप्तानी की होती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपके साथ रहते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने बहुत सीखा है जिन कप्तानों के अंडर में खेला हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, काउंटी क्रिकेट इवन हो, या कोई भी PSL हो। जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स से मिलते हैं आपको एक वो होता है। फिर मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ज़रा एक ओरिजिनल आपको फील आनी होती है एज अ पर्सन। मैं इस पर कंप्लीट यकीन रखता हूँ कि एज अ कैप्टन आपको अपने प्लेयर्स के लिए आपको सबसे पहले आपको खड़ा होना होता है। प्लेयर्स की जो वेल बीइंग होती है उसमें कभी कभार आपको क्रिकेट पे साइड पे रख के, परफॉर्मेंस को साइड पे रख के, आपको एक इंसान के नाते आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए एज अ कैप्टन। आपको केयर करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके जो प्लेयर्स हैं किसकी क्या सिचुएशन है।
पर्सनली भी, ऑफ द फील्ड भी कुछ हो सकता है, ऑन द फील्ड भी कुछ हो सकता है, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं समटाइम्स, क्योंकि आप सिर्फ 11 खिला सकते हैं, स्क्वाड में सिर्फ 18 लड़के रख सकते हैं। इसमें अगर आप में अंडरस्टैंडिंग ना हो अपने प्लेयर्स की सिचुएशन की, तो आप काफ़ी गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो आई थिंक मेरी फ़र्स्ट चीज़ ये होती है कि किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी को ऊंच नीच होती है, किसी को अकेला ना छोड़ें, बुरा वक्त सब पे आता है। देखें, अच्छे प्लेयर की तारीफ़ करना, अच्छे प्लेयर को रिवॉर्ड करना बहुत आसान है, बट बाकी भी जिससे नहीं हो रहा होता या जो नहीं खेल रहा होता, उसकी आप किस तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। आई थिंक मेरी कैप्टनसी की जो भी थॉट्स हैं, वो चीज़ उसमें सबसे पहले होती है कि उस बंदे के लिए मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, किस तरीके से उसके काम आ सकता हूँ, किस तरीके से उसको समझा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी के फेवरेट रहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे खुश भी नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं किसी के लिए, आप ज़रूर वो करें। Okay, thank you very much. And once Thank you.